इस सत्र में तीन लेक्चर होंगे। प्रोफेसर रंजन कुमार सिंह, डॉक्टर प्रवीण चंद्र पांडे और डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा, तीन लेक्चर होंगे। तीनों लेक्चर निवेश है, अच्छे लेक्चर है। तो सबसे पहला लेक्चर जो होगा वो होगा डॉक्टर रंजन कुमार सिंह। थोड़ा सा सर का इंट्रोडक्शन तो ऐसे थे, लेकिन सर पटना यूनिवर्सिटी से एमएससी किए हैं, बीएससी पीएचडी सर का बीएचयू से है। सबसे बड़ा जो हम लोग का एक सपना होता है रिसर्च स्कॉलर का, वो होता है एलेक्जेंडर हम्बोल्ट फेलोशिप। सबको उसके मतलब सबको मिला हुआ है जर्मनी का, और उसके अंतर्गत सर प्रोफेसर के साथ कार्य किए, बड़े साइंटिस्ट हैं। सर का रिसर्च इंटरेस्ट इस समय जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, रिएक्शंस, लिक्विड क्रिस्टल बेस्ड सेंसर्स, थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिक, सर जो रमन करते हैं, एसईआरएस करते हैं, आईआर, सर के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी। हम लोग भी अपने स्टूडेंट को भेजते हैं वहाँ पर, और आईआर रमन सब कुछ सर के यहाँ से आराम से हो जाता है। और ये सर पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। सर के लगभग 190 पेपर जो हमने रिसर्च टीम से देखा है, 192 पेपर में जो नेशनल इंटरनेशनल है, और सर का बहुत सारा पेज नहीं है सर के बारे में नहीं। सर का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेजर फंक्शन क्या यूज है, उसके बारे में सर लेक्चर देंगे। तो सर को सबसे अनुरोध है कि सर आगे अपना लेक्चर शुरू करें। थैंक यू। पास में है ले जाए। सर ये भी एक और लगा देंगे सर, क्योंकि लाइव है ना, ऑनलाइन। अच्छा निकल गया क्या? ये लेक्चर सर ये पॉइंटर नहीं, पॉइंटर है वो पॉइंटर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर डीके सिंह जी, हमको यहाँ बुलाने के लिए, इसके लिए धन्यवाद पहले, और उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए भी आपको धन्यवाद। आप लोगों के लिए मैं जो टॉपिक चुना हूँ, ज्यादातर विद्यार्थी दिख रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। ज्यादातर विद्यार्थी लोग हैं, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से हमने लेक्चर को ट्यून करने का भी कोशिश किया है। बहुत ज्यादा रिसर्च न हो, थोड़ा बेसिक हो, ताकि आप लोगों को कुछ इसमें से थोड़ी बात समझ में आ सके। कॉन्फ्रेंस के लेक्चर का सबसे बड़ा दोष यही है कि समझ में कम आता है, और आप समझने के लिए बैठे भी नहीं रहते। तो आप समझने के लिए रेडी हो जाइए, उसमें से थोड़ी भी हम लोग समझते हैं तो अच्छा लगेगा। तो टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जानते होंगे कि नेशनल साइंस डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? रमन की डिस्कवरी को, और इस रमन की डिस्कवरी को नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए मनाते हैं। और इंडिया की धरती पर जन्म लेके, इंडिया की धरती पर काम करके और नोबेल प्राइज पाने वाला इकलौता वैज्ञानिक, एशिया का पहला। तो इसको हमने चुना है। ये लेजर के बिना ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी काम नहीं करता है। इस पर, इसकी तरफ हम लोग फोकस करेंगे। आगे बढ़ाना ध्यान से करते नहीं बना इधर घुमा नहीं सर, यहाँ ठीक अपनी सहूलियत से कर लें। रमन के विषय में हम लोग
इंडिया के सभी साइंटिस्ट को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने रमन की थोड़ी बेसिक बातें बताई हैं। आप में से भी कोई रमन हो सकता है, आपने कोई रमन बने, के लिए नवंबर 1818 देखिए इन्होंने बीए, कब बीएससी को बीए बोलते थे, बीए कर लिया, उन्होंने एमए किया, फील्ड में नहीं जा विदेश की डिग्री में जगह नहीं मिली तो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और फाइनल सर्विस ज्वाइन। work done on Indian soil. अब हम लोगों को इम्पोर्टेंट है और कम से कम सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बीएससी वाले को जानना चाहिए। एक मॉलिक्यूलर सिस्टम है, आगे आ जाओ। कर दीजिए यहाँ से एक मॉलिक्यूलर सिस्टम है। मॉलिक्यूलर मतलब आप एटम, मॉलिक्यूल जानते होंगे। मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल स्टेट है। अभी हमारे पहले वाले सुनील सर के लेक्चर में आपने देखा होगा कि किसी मॉलिक्यूल में एटॉमिक स्टेट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, वाइब्रेशनल स्टेट, रोटेशनल स्टेट्स होते हैं। कोई मॉलिक्यूलर सिस्टम में पर अगर कोई इंसिडेंट लेजर बीम पड़ती है, चाहे अब मान लीजिए फोटोन कहिए, कोई मोनोक्रोमेटिक बीम पड़ती है जिसका फोटोन का फ्रीक्वेंसी h न्यू 0 है, तो स्कैटर्ड फोटोन में तीन तरह के हो सकते हैं। कुछ maximum number of photons will have the same frequency, small number will have reduced frequency and small number will have increased frequency। और इनमें से जो फ्रीक्वेंसी जिसकी इंक्रीज हो गई उसको बोलते हैं एंटी स्टोक्स रमन लाइन, जिसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई उसको बोलते हैं स्टोक्स रमन लाइन। ये स्टोक्स सब पहले से फ्लोरेसेंस में पॉपुलर था, उसी स्टोक्स को रमन ने भी ले लिया था। तो ये मॉलिक्यूलर सिस्टम में होगा। कंडेंस्ड स्टेट जैसे लिक्विड है, सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सिस्टम में। अगर गैसियस सिस्टम में जाते हैं तो रोटेशनल स्टेट से भी रामन स्कैटरिंग हो सकती है, वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल। तो अब इसको आप एनर्जी लेवल डायग्राम से समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का दो वाइब्रेशनल लेवल है, V0 V1। V0 ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट, V1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इन V0 state, a small fraction will be available in V1 state also। तो अब अगर आपका ये बीम इंसिडेंट, मोनोक्रोमेटिक बीम इंसिडेंट हो रहा है
और वो कोई भी जीरो स्टेट के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि इट विल स्कैटर थ्रू ए वर्चुअल लेवल टू एंड फाइनली इट लैंड्स अप एट v is equal to 1 स्टेट। और इस प्रोसेस में देखिए ये एनिहिलेटेड फोटोन, एक क्रिएटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी घट गई, तो ये एंटी स्टोक्स प्रोसेस है। और दूसरे प्रोसेस में ये आपको ये v1 स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट किया फोटोन और उसकी स्कैटरिंग, फिर स्कैटरिंग के बाद वो ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो ये प्रोसेस में स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बढ़ गई और ये एंटी स्टोक प्रोसेस है। तीसरे वाले प्रोसेस में सेम रह गई रेले स्कैटरिंग प्रोसेस। रामन जब इसकी डिस्कवरी, इस पर काम कर रहे थे रामन की डिस्कवरी करने के लिए, तब तक रेले स्कैटरिंग नोन थी, तो और कुछ वैज्ञानिकों ने फिर अब इसको जो सेम फ्रीक्वेंसी का जो स्कैटरिंग है इसको इलास्टिक स्कैटरिंग भी बोलते हैं। फिर आप लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा होगा, वहां पर रिड्यूस हो जाती है, वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग है। तो अब लोगों ने काम करना शुरू किया वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कि ये इनइलास्टिक स्कैटरिंग पर काम करना शुरू किया। उसमें बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट निकाले, बट फाइनली रामन वाज सक्सेसफुल टू अचीव द गोल। अब देखिए एंटी स्टोक्स, अब चूंकि इस v0 स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं v1 स्टेट के कंपैरिजन, और ये v0 स्टेट से ओरिजिनेट करता है, इसलिए स्टोक्स प्रोसेस की, स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और एंटी स्टोक्स की लाइन ज्यादा होगी। और इन दोनों का कंपैरिजन, इन दोनों की इंटेंसिटी अगर मेजर करिएगा तो रेले लाइन से आइडेंटिकल शिफ्टिंग होगी। इन दोनों की इंटेंसिटी का अगर रेशियो निकाल लेंगे तो इंटेंसिटी का रेशियो इस फॉर्मूला से दे सकते हैं, और यहाँ इंटेंसिटी रेशियो से एक चीज आप बहुत प्रिसाइजली निकाल सकते हैं। गेस करो बच्चों, क्या निकाल सकते हैं? सैंपल का टेम्परेचर कितना है, ये बहुत प्रिसाइजली एंटी स्टोक और स्टोक के रेशियो को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब रामन स्कैटरिंग सारे वाइब्रेशनल लेवल एक मॉलिक्यूल लीजिएगा तो उसमें 3n-6 वाइब्रेशंस हैं अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो, और सबके सब रामन एक्टिव नहीं होंगे, सबके करेस्पॉन्डिंग रामन बैंड नहीं मिलेगा। उसके लिए एक सिलेक्शन रूल है, कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि पोलराइजेबिलिटी ड्यूरिंग वाइब्रेशन शुड चेंज। अगर पोलराइजेबिलिटी चेंज करती है तो होगा। स्कैटरिंग और फ्लोरेसेंस में और सारे प्रोसेसेस, तमाम प्रोसेसेस एक साथ हो रही हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक स्केल है, टाइम स्केल। किस टाइम स्केल पर कौन घटना हो रही है? जैसे आप हम एक बार ब्लिंक कर रहे थे, आधे सेकंड में, 10 सेकंड में ब्लिंक कर रहे हैं, हर घटना का एक टाइम स्केल है। उस तरह ये स्कैटरिंग प्रोसेस का जो टाइम स्केल है करीब 10⁻⁻14 यानी 2 सेकेंड ऑर्डर का है, और दूसरी घटना फ्लोरेसेंस है वो 10⁻⁸ सेकेंड है। अब लेजर की एंट्री यहाँ कहाँ होती है रामन? क्योंकि रामन ने डिस्कवरी किया रामन इफेक्ट का 1928 में, लेकिन 1960 तक रामन का कोई भी खास प्रभाव यूज नहीं हो पाया। कारण रामन एक बहुत ही वीक प्रोसेस है, रामन बहुत वीक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में एक एस्टिमेट के हिसाब से 10⁻⁶ 1 बिलियन प्रोटॉन अगर इंसिडेंट होंगे तो बेस्ट पॉसिबल स्कैटरर के केस में सिर्फ एक प्रोटॉन के रामन स्कैटर्ड होने की संभावना है। तो इतना वीक प्रोसेस है, इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लोरेसेंस डोमिनेट कर जाता है, फ्लोरेसेंस आपको दिखेगा, लेकिन रामन दिखता नहीं था। वीक प्रोसेस है, इसलिए तब तक इंतजार करना पड़ा रामन का यूज करने के लिए जब तक कि लेजर की डिस्कवरी नहीं हुई।
क्विक प्रोसेस है, इसलिए हमारा सोर्स बहुत इंटेंस होना चाहिए। तो लेजर एक इंटेंस सोर्स है, आप लोग कई लेक्चर्स में देखेंगे भी। रमन की और लेजर के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, बेसिक थियोरेटिकल आइडिया है वो क्या है? स्टिमुलेटेड इमिशन, LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन जो है यही की है लेजर प्रोडक्शन का। तो ये 1997 में डिस्कवर हुआ स्टिमुलेटेड इमिशन। उसके बाद 1954 में लेजर बन गया, काफी पहले। वो 18 वो थोड़ा सा गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। 1947 में मेजर बन गया। 1954 में पहले मेजर बना। मेजर और लेजर का प्रिंसिपल सेम है, सिर्फ एम का मतलब वहां लाइट है, यहाँ एम का मतलब माइक्रोवेव है। तो अब ये लेजर्स बने। आगे चलिए, लेजर बनने के बाद ये लेजर दो फॉर्म में आते हैं, एक कंटिन्यूअस वेव लेजर और दूसरा पल्स लेजर। पल्स लेजर बनाने के दो इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है क्यू स्विचिंग और एक है मोड लॉकिंग। क्यू स्विचिंग में क्या करते हैं कि आप थोड़ी कैविटी में, लेजर के बेसिक्स तो पढ़े होंगे ना बच्चों, तो क्यू स्विचिंग में क्या करते हैं कि थोड़े के बाद जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं, उस तरह लेजर का एम्प्लीफिकेशन थोड़ी देर के लिए लेजर का आउटपुट रोकते हैं और उस बीच में ये पंपिंग जारी रहती है। एनर्जी स्टोर होती रहती है, लेकिन हम एनर्जी को आउटपुट के रूप में लेते नहीं है, उसको लीक नहीं होने देते हैं और एक क्षण के लिए हम ओपन करते हैं और खूब सारी एनर्जी का बस निकलता है। ये कॉमन भाषा में, साइंटिफिकली भाषा में, जैसे आप देखिए यहाँ एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, यहाँ से लेजर आउटपुट ले रहे हैं और किसी क्षण आप ऐसे व्यवस्था कर दीजिए कि इधर से एनर्जी पंपिंग भी हो रही है। ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि ये जो पैसेज है ये रुक जाए, लेकिन पंपिंग एनर्जी की पंपिंग जारी रहे। एनर्जी की पंपिंग जारी रहे, वैसे केस में एनर्जी इस एक्टिव मीडियम में स्टोर होती जाएगी और ज्यों ही आप इसको फिर अलाउ करेंगे टू एंड फ्रो पैसेज, रिफ्लेक्शन अलाउ करेंगे, वैसे क्या होगा कि एम्प्लीफिकेशन बहुत तेजी से होगा और यहाँ पर बहुत हाई लेजर पल्स निकलेगी। ये मेथड को बोलते हैं क्यू स्विचिंग। बहुत लंबी बड़ी टॉपिक है, लेकिन इसको मैं नट सेल में मतलब दिमाग में वो बताया हूँ कि इस तरह क्यू स्विचिंग जो है वो करते हैं। दूसरा मेथड है, अगला क्लिक करिए। दूसरा मेथड है मोड लॉकिंग। लेजर को पल्स लेजर बनाने के लिए दूसरा मेथड है मोड लॉकिंग। मोड लॉकिंग के लिए जो पिछला देखे थे उसमें लेजर कई मोड्स में ऑसिलेट करता है। एक्चुअली लेजर को बनाने के लिए आप कैविटी बना देते हैं, कैविटी के अपने मोड्स होते हैं और कैविटी के मोड्स ही जो लेजर के गेन प्रोफाइल में पड़ते हैं वही एम्प्लीफाई होते हैं। तो वो मोड्स, मान लीजिए हमारे पर्टिकुलर लेजर कैविटी के लिए इतने सारे मोड्स हैं, कैविटी मोड्स, जो लेजर के गेन प्रोफाइल में पड़ रहे हैं और एम्प्लीफाई हो रहे हैं। इन पर एनर्जी स्टोर है। तो ये एक्चुअली इनकोहेरेंट है, इनके बीच में कोहेरेंस नहीं है, इनकोहेरेंट होते हैं। और आप अब मोड लॉकिंग में ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ये सारे मोड्स जो हैं वो कोहेरेंट हो। वो जब कोहेरेंट हो जाते हैं तो आपको एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसको आप पढ़े हैं, तो वो सिचुएशन है एन स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न। सारे स्लिट्स से जो लाइट आते हैं सभी कोहेरेंट होते हैं और आपको बेसिक पीक मिलती है और एक सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा और इन दो मैक्सिमा के बीच में n-1 मिनिमा और n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा। इस तरह की जो सिचुएशन बनती है वही सिचुएशन क्रिएट होती है। एंड नाउ यू ट्यून इट विद द टाइम।
तो अब आपके आउटपुट में क्या हो जाता है, ये सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद लेजर की हाई पल्सेस मिलती है। तो ये है मोड लॉकिंग, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी थियरी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। लेकिन मोड लॉकिंग इस तरह से अचीव करते हैं, हम इन सारे मोड्स को फेज लॉक कर देते हैं, कोहेरेंट बना देते हैं। इस तरह केयर लेंसिंग एक है। केयर लेंसिंग में आप केयर लेंसिंग का यूज करके और छोटे ड्यूरेशन का लेजर पल्स बना सकते हैं। लेकिन अब इन सब डिस्कवरी के बाद लेजर पल्स बनाया, हाई पावर और एनर्जी को थोड़े समय के लिए आउटपुट में लिया, तो लेजर के पल्स का पावर ज्यादा होगा ना, जितना कम समय का होगा, पिको सेकंड लेजर होगा, बहुत हाई पावर का होगा, पिको सेकंड होगा, थोड़ा कम पावर का होगा। इस तरह लेजर पल्सेज आप बनाते चलेंगे। अलग अलग तरह के यूज के लिए अलग अलग तरह के लेजर बनाए। तो अब बात इसके आगे वाला चलिए, ये भी केयर लेंसिंग की मोड लॉकिंग का ही एक मेथड है, अब डिटेल में बहुत जल्दी नहीं जा सकते। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर हमने कुछ किया है, ये किलोवाट पावर का लेजर बना, मेगावाट पावर का लेजर बना और गीगावाट लेजर का बना। अब ये सब सिचुएशंस हैं जहां जहां मोड क्यू स्विचिंग और मोड लॉकिंग की डिस्कवरी होती गई और ये पावर लेजर का पावर बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते यहाँ आके देखिए अब पावर रुक गया, अब बढ़ना बंद हो गया, समय बढ़ता गया, ईयर बढ़ते गए, लेकिन लेजर का पावर अब बढ़ना 1970 के बाद रुक गया और ज्यादा पावर की हमको जरूरत थी। उस समय आपको याद होगा 2018 में जो नोबेल प्राइज मिला था वो लेजर के लिए ही मिला था और उसकी 2 स्लाइड हम लाए हैं आपके इंटरेस्ट के लिए। 2018 में इसी लेजर पर नोबेल प्राइज मिला था कि यहाँ से जो ये रुक गया था इसको आगे अब कैसे हम एम्प्लीफाई करें। इसको एम्प्लीफाई करने के लिए अगला स्लाइड कर दीजिए। अब एक देखिए ये लाइट एक प्रेशर क्रिएट करता है। लाइट डालेंगे तो हम लोग बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, लाइट प्रेशर क्रिएट करता है। एक एस्टीमेट है कि अगर 1 वाट पावर के बीम लेजर को अगर एक मिरर पर इंसिडेंट कराएंगे तो उस पर जो फोर्स लगता है वो 10⁻⁸ न्यूटन का। और उस लेजर को अगर आप फोकस कर देते हैं और एक मॉलिक्यूल पर एक छोटे 1 माइक्रोमीटर के स्फीयर पर अगर इंसिडेंट कराते हैं तो ये करीब 1 लाख ग्रेविटी के बराबर ये फोर्स काम करता है, इतना बड़ा फोर्स काम करता है। तो इस फोर्स को यूज करके थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा, लगता है एक और नहीं और हाँ वो नहीं दिख रहे हैं। इस पावर को यूज करके हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेजर बीम लेजर की जो बीम होती है उसकी बीम के सेंटर में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, साइड थोड़ी कम होती है। और आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंटेंसिटी डिपेंडेंट है। तो कोई भी अगर लेंस से कोई भी मटेरियल रखेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर में हाईएस्ट हो जाएगा, साइड में कम रह जाएगा। तो वो मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, फोकस हो जाएगा। वो मटेरियल के अंदर भी लोग लेजर फोकस हो जाएगा, तो लेजर फोकस हो जाएगा तो मटेरियल बर्न भी कर सकता है। बहुत सारी घटनाएं होंगी। तो अब जो कारण क्या था कि लेजर अब एक लेवल के बाद लेजर पावर स्विचिंग या वो लॉकिंग से हम बढ़ा नहीं पा रहे थे। कारण क्या था कि लेजर मटेरियल भी तो है, लेजर मटेरियल से भी अगर बहुत हाई पावर पास करेगा तो वो भी तो बर्न कर सकता है, वो जल जाएगा। तो अब जल जाएगा तो ऐसा किया गया, ऐसी व्यवस्था किया कि चिर्प लेजर बनाया गया। उसमें लेजर के पल्स को एक्सपेंड किया गया टाइम के साथ
और उसके बाद धीरे धीरे पास किया, और पास करने के बाद और मटेरियल में पास किया, पास करने के दौरान एम्प्लीफाई हुआ, और एम्प्लीफाई करने के बाद फिर उसको कंप्रेस कर दिया, और इसको बोलते हैं चर पल्स टेक्नोलॉजी। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला 1918 रॉबर्ट मुनरो। अब ये हमारा रमन स्पेक्ट्रोमीटर है। इसका रमन स्पेक्ट्रोमीटर इसका डिजाइन है, इसके ऑप्टिकल डायग्राम में बहुत कुछ हम समय नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत लेट ऑलरेडी चल रहा है। इसलिए अब देखिए इसमें लेजर की यूज कहाँ से शुरू हुई। इसमें लेजर की बात की, पल्स लेजर और कंटिन्यूअस वेव लेजर, CW लेजर, दोनों तरह के लेजर का यूज करके रमन के डिफरेंट रमन की तो डिस्कवरी एक थी, लेकिन उसके बाद उसके साथ 2500 रमन के वेरिएंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के ब्रांचेस पैदा हुए और वो आज यूज हो रहे हैं। इसमें जो मुख्य इवेंट्स हैं आप देखिए, लेजर यूज्ड इन एज लाइट सोर्स फॉर रमन स्पेक्ट्रोमीटर इन 1960। डिटेक्शन अगर सोर्स कम कमजोर हो तो उसका डिटेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिटेक्टर के नाम पर किस कंपोनेंट का नाम जानते हैं आप लोग? फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, CCD। नहीं तो CCD का डिस्कवरी, CCD बहुत ही इफिशिएंट डिटेक्टर है, और इसकी डिस्कवरी होने के बाद रमन के एक्सपेरिमेंटेशन में लेजर मिलाकर बहुत सारे एडवांटेज, बहुत सारे एवेन्यूज खुले, बहुत सारे रमन के खुले हैं। उसको आगे बात करते हैं। चलिए देखिए कुछ वेरिएंट्स का नाम सिर्फ मैंने लिखा है। रमन की जब हाई पावर लेजर की अवेलेबिलिटी हो गई तो रमन के बहुत सारे वेरिएंट्स आए। स्पॉन्टेनियस रामन, ये भी लेजर के साथ दिखने लगेगा। हर मटेरियल का रामन स्पेक्ट्रा आप लेने लगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनका हम डिजाइन भी करने की कोशिश करेंगे, आपको इससे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। कोहेरेंट एंड कार्स, सरफेस एनहांस्ड कार्स, हाइपर रमन स्कैटरिंग, रमन इंड्यूस्ड केयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और बहुत सारे हैं लेकिन नाम मैंने लिखे हैं। बहुत सारे लेजर के चलते बहुत सारे रमन के ब्रांचेस खुले। अब इसमें से कुछ डिफाइन करते हैं। रमन का सबसे बड़ा दुश्मन है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का टाइम स्केल है 10⁻⁻8 सेकेंड, और रमन का टाइम स्केल है 10⁻⁻14 सेकेंड। अब दोनों में से अगर एक साथ दोनों घटनाएं हो रही हैं तो एक फ्लोरेसेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमको रमन को इफेक्ट को आने ही नहीं देगा, वो सब कुछ उसी में स्केयर आउट करता है। लेकिन फायदा यही है कि रमन स्कैटरिंग जो है 10⁻14 सेकेंड के टाइम स्केल में होती है। तो ये घटना होगी बाद में, पहले एक घटना हो गई, अब हमको इसको डिटेक्ट करने का मेथड निकालना। तो ये फायदा हुआ। तो हम पीछे रहिएगा इसमें दो तीन। इसमें रमन के मेजरमेंट में हम लोग ध्यान करते हैं कि हम इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से काफी नीचे रहें ताकि इस फ्लोरेसेंस से पाला ही ना। अगर आप प्री रिजोनेंस में अगर इसके नजदीक चले गए तो थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, और प्री रिजोनेंस रमन स्कैटरिंग इसको बोलते हैं। किसी एक्साइटेड स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल से मैच कर गया तो ये डिस्क्रीट रिजोनेंस रमन, और कंटिन्यूम के साथ भी आपको प्योर रमन। सरफेस एनहांस्ड रमन, इस वीकनेस को रमन प्रोसेस बहुत वीक है। इस वीकनेस को दूर करने के लिए एक दूसरा टेक्नोलॉजी आया, सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें क्या होता है कि आप निकल नैनो पार्टिकल के ऊपर अपने एनालाइट मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर देंगे। एब्जॉर्ब कर देंगे तो कुछ वाइब्रेशनल स्टेट्स की इंटेंसिटी काफी बढ़ जाएगी, और नॉर्मल रमन आपको नहीं मिल रहा था, जैसे ही उसको नैनो मटेरियल पर रखेंगे तो मिल जाएगा। इसकी भी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई थी। इलेक्ट्रोड को डालकर और बेंजीन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। जैसे ये देखिए नॉर्मल रमन है एक ही मटेरियल का, मालाकाइट ग्रीन का, और ये सरफेस एनहांस्ड रमन। दो मेन मैकेनिज्म है।
इसके। अब इसको आगे आप लोग जब कभी रिसर्च वगैरह में जाएंगे तो पढ़ेंगे, या पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे। केमिकल एनहांसमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स जानते भी। आगे अब इस सर्च का बहुत सारे बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है। हम लोगों को बायोलॉजिकल एप्लीकेशन सर्च के बहुत ज्यादा हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन मेटल सरफेस, एप्लीकेशन टू बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड catalytic interfaces, detection of biomolecules at very low concentration, detection of environmental pollutants, radioactive materials. It is used for sensing impurities in synthesized materials. और सर्च टेक्निक के और सारे और दूसरी टेक्निक जोड़ के और सारे टेक्निक्स बनाए गए हैं। और ये सब कुछ अब आपको देखिए स्टिमुलेटेड ग्रामर। अगर लेजर का पावर गीगावाट का होगा, गीगावाट समझ रहे हैं ना, 10 टू द पावर 9 वाट का, तो 10 टू द पावर 9 वाट का कोई भी कंटिन्यूअस वेव लेजर नहीं मिलेगा। तब आपको पल्स लेजर में जाना पड़ेगा। और पल्स लेजर जाने के बाद अगर आप ऐसी व्यवस्था करते हैं कि 2 लेजर हो आपके पास, 2 लेजर हो इन ए मोलिकुलर मीडियम, a pair of light waves can resonate with molecular vibration। शब्द खड़े हैं, लेकिन इन दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, इसका सिंपल मीनिंग है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, इट शुड मैच विद वन ऑफ द वाइब्रेशनल वेव। जैसे ही ये मैच करेगा उस समय एक जो लोअर फ्रीक्वेंसी की होगी उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी, और जो हायर फ्रीक्वेंसी की होगी उसकी इंटेंसिटी घटने लगेगी। तो बढ़ने वाली फ्रीक्वेंसी को आप यूज करेंगे तो उसमें गेन को स्टडी करेंगे, घटने वाली को लॉस करेंगे, और इसको स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग कहते हैं। ये संभव नहीं था तब तक जब तक कि गीगावाट पावर का लेजर अवेलेबल नहीं हो, और वो पल्स लेजर अवेलेबल हुआ। इसमें देखिए कि जो इसका फायदा स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग का क्या है कि इसमें जो पीक है वो शार्प होता है। ये स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग रमन स्पेक्ट्रा है, और ये स्पॉन्टेनियस रमन स्पेक्ट्रा है। क्वालिटी बेटर होती है, ठीक। इसका भी बहुत जगह यूज होता है, रमन लेजर में यूज होता है, और बहुत जगह यूज होता है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसका नाम है, सुनते होंगे आप लोग, कोहेरेंट एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग, जरूर सुना होगा, क्योंकि ये इतना कॉमन हो चुका है। अब हम लोगों के यहाँ तो नहीं है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन इसका कॉस्टली और डिफिकल्ट है, लेकिन बाकी जगहों पर है। कार्स में क्या होता है कि देखो ये दोनों लेवल वही दोनों लेवल है वाइब्रेशनल के, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट सेक्टर V0 V1। तो V0 अब ये 3 लेजर्स, 3, एक पंप बीम और एक स्ट्रोक बीम और एक प्रोब बीम, 3 बीम एक साथ इंसिडेंट करते हैं, और उनमें क्या होगा कि तब एक नई वेव, नई कोहेरेंट वेव जनरेट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा PR प्लस ओमेगा P माइनस ओमेगा S। और ये ओमेगा P माइनस ओमेगा S अगर किसी वाइब्रेशनल लेवल से मैच कर दिया तो उस समय आपकी इंटेंसिटी काफी हाई हो जाती है, और वही कोहेरेंट। अब इनमें दोनों में फर्क है कि स्पॉन्टेनियस रमन में जो रमन स्कैटर्ड सिग्नल मिलते हैं वो कोहेरेंट नहीं होते, वो कोहेरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ कार में या स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग में जो सिग्नल मिलते हैं वो कोहेरेंट होते हैं। जब हम कोहेरेंट और इनकोहेरेंट की बात कर रहे हैं तो कोहेरेंट इनकोहेरेंट का मतलब ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, और कोहेरेंट से सीधे चले जाओ लेजर। तो these car signals have laser like property। अब डेप्थ प्रोफाइलिंग, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइट के साथ अगर कर रहे हैं और इस टेबल का पिक्चर लेना चाहते हैं तो टेबल के ऊपरी सरफेस का ही पिक्चर ले पाएंगे। All information you have in rubber spectroscopy is from the upper layer of the surface. You cannot go deep because you are using light, visible light। अंदर जाएगा नहीं, जाएगा तो आएगा नहीं, और प्रोसेसर कोई भी नहीं। तो डेप्थ प्रोफाइलिंग के लिए एक नया टेक्निक डेवलप किया गया, और स्पेशली
ऑफसेट, स्पेशली ऑफसेट रामन स्कैटरिंग टेक्निक। इंसिडेंट लेजर बीम यहाँ होगा और ये नीचे जाएगा और हम कलेक्ट करेंगे यहाँ दूसरी जगह। सिंपल टेक्निक है कि हम दूसरी एक जगह से कलेक्ट कराएंगे, दूसरी जगह से कलेक्ट करेंगे। तो अब हमको लाइट ऐसी यूज करनी पड़ेगी जो या तो इसके अंदर जाए, जैसे आप फ्रीक्वेंसी ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो उसको जाए। तो ये जो स्पेशली ऑफसेट रामन स्कैटरिंग टेक्निक है, इसको यूज करते हैं डेप्थ प्रोफाइलिंग के लिए, आपके ऊपरी लेयर के नीचे की इंफॉर्मेशन को करने के लिए। कितना टाइम लगेगा? तो 10 मिनट लगेगा तो बता दीजिए मैक्सिमम। 5 मिनट तो देखिए डॉक्टर का बहुत सारे चीज बता सकते हैं। हाँ, लेट हो गया। अब कोई भी रामन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे स्पॉन्टेनियस हो, चाहे स्टिमुलेटेड हो, चाहे कार्स हो, ऐसी ही लाइन दिखेगी। और दूसरे भी रामन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसी ही लाइन दिखेगी। all information are line in this line profile, and you have to analyze this line to get any information about the system. तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। आगे चलिए, पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं और वो पैरामीटर लाइन वेव और इंटीग्रेटेड इंटेंसिटी, इसको छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। देखिए सर, और इसको इसके ऊपर चलिए, थोड़ा अपना एप्लीकेशन बता दें। हाँ, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको तो बहुत जगह यूज कर सकते हैं। कोई भी यूज जो है वो एक पेज में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जो कुछ यूज हम लोग करते हैं वही यूज हमने यहाँ पर लिख रखा है। स्टडी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए लेवल फ्री प्रोब। इट कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस आल्सो, used to characterize 2D materials, transition metal, diphenolide, phenol modes of crystals, used in chemically selective spectral imaging and drug delivery, monitoring of metabolic activity of body, no detailed information about the molecular composition and concentration various species, monitoring biocatalytic reactions, drug metabolism in aqueous medium, liquid crystals में भी हम लोग यूज करते हैं। ये सब वो यूज हैं जो हमने किए हैं। इसको भी आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। ये बताते हैं आपको रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज। ये ओलिवर की पेंटिंग, ओलिवर का जो पेंट है उसका ये रामन स्पेक्ट्रम है, ये हमने कहीं से लिया है। और ओलिवर के पेंट का रामन स्पेक्ट्रम है, और उसके नीचे एक दूसरा पेंटर है जिसने क्लेम किया कि हमारे पास कुछ मिनिएचर्स हैं, इसको आप टेस्ट करिए कि क्या ये ओलिवर के ही है कि किसी दूसरे के है। उसका टेस्ट किया गया तो इसका स्पेक्ट्रम दूसरा है और ये वर्मिलियन का है। ये जो ओलिवर का था वो रेड लेड का है। पहचानना एवरी रामन, एवरी मॉलिक्यूल हैज ए फिंगर, रामन फिंगर, तो सबके यूनिक रामन स्पेक्ट्रम होंगे, जिससे आप पहचान सकते हैं। अब इनका हम नट सेल में बात बता रहे थे टाइम के हिसाब से, जैसे ड्रग कोई आप लेते हैं, एस्पिरिन खाते हैं, बड़ी कॉमन सी दवाई है एस्पिरिन खाते हैं। ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। कुछ दवाइयां जो है एस्पिरिन शायद हो, ये आप खाते हैं दूसरे फॉर्म में, और वो खाने के बाद शरीर में मेटाबॉलाइज होकर दूसरी फॉर्म में बन जाती है और एब्जॉर्ब होता है उसका दूसरा फॉर्म। ये करीब सभी मेडिसिन के साथ होता है। इसके अलावा शरीर में और सारी घटनाएं घट रही हैं और सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी शरीर में हो रही है,
और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एक इनिशियल मटेरियल है, इनिशियल सब्सटेंस है, एक एंड प्रोडक्ट है। जैसे आप लोगों के मसल भी एक क्रिएटिन मॉलिक्यूल स्टोर होता है। क्रिएटिन जो एनर्जी सोर्स है और मस्कुलर एक्टिविटी के दौरान वो धीरे धीरे क्रिएटिनिन में चेंज करता है, जो किडनी से फिल्टर आउट होता है और किडनी के टेस्ट के लिए क्रिएटिनिन का टेस्ट भी करता है, क्रिएटिनिन और यूरिया का टेस्ट भी करता है। तो वो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, इसके इंटरमीडिएट्स को स्टडी कर सकते हैं रमन सिग्नेचर से, और ये प्रोसेस को लेबोरेटरी में क्रिएट करके इसमें क्या इंटरमीडिएट है और कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, इसको स्टडी जो नाम दिख रहा है इनमें ये किया गया है रमन ये यूज है आपका सब नैनो मटेरियल का। ये ग्रेफीन का रमन स्पेक्ट्रम है। ये जो है MOS2 होना चाहिए, MOS2 का क्वांटम डॉट है, इसका रमन स्पेक्ट्रम है। इसके पैरामीटर्स को स्टडी करके उसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। MOS2 का ये फुलरीन C70 और C60 का है। दोनों के रमन स्पेक्ट्रम में मार्क चेंजेस हैं और उसमें सभी कार्बन बॉन्ड ही है। ये लिक्विड क्रिस्टल का जो लिक्विड क्रिस्टल में यूज है, कि लिक्विड क्रिस्टल के ट्रांजिशन और रही है। हाँ, लिक्विड क्रिस्टल के ट्रांजिशन को बहुत क्लियरली रमन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। देखिए 90 डिग्री का स्पेक्ट्रम, 98 का और 100 का। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। प्रैक्टिस करने की सर लग गया है। इसके आप सर दो लेजर इंक्लूडेशन लिया था, ठीक है, फॉर्म ऑफ सर प्लस सेटिंग इक्विपमेंट है 10 to power 9 गीगाहर्ट्ज। तो सर लेकिन सर जब उसका जो ग्राफ बना रहा है इसका रेजोनेंट कर्व कह सकते हैं सर, आई मीटर के कंपेयर में, तो सर हर जगह सर सेम कर्व देखने को मिला, ऐसा क्यों सर? इसका रीजन फिर से एक बार शायद बैक करिए तो फॉर्म वाला इसका शुरू और शुरू में क्योंकि शुरू का ही तो अच्छा और शुरू, हाँ उसे बढ़ा दीजिए। और रमन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन जो है वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है। एक वाइब्रेशनल V0 दिख रहा था, V1 ये ट्रांजिशन, और इस ट्रांजिशन में एक रमन प्रोफाइल आती है और नीचे एक लाइन जो दिखाए थे ना, और एक तो लाइन था रमन प्रोफाइल वाली, इसको ये ना हर केस में यही मिल रहा है। हर केस में इसी पैटर्न का रमन लाइन मिलेगा। कारण ये है कि रमन लाइन का जो ओरिजिन है वो V0 V1 ट्रांजिशन है। सो ट्रांजिशन का हर एक ट्रांजिशन की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ले लो, चाहे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ले लो, चाहे रोटेशनल ट्रांजिशन ले लो, हर एक ट्रांजिशन में एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांजिशन होगा। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? डेल्टा T इज इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। व्हाट डज इट मीन? कि अगर आपका डेल्टा T छोटा है तो डेल्टा E बड़ा होगा। इसका मतलब कि जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं जिनका टाइम स्केल 10 to the power -8 सेकंड 10 to the power -9 सेकंड्स का है, उनका विड्थ ज्यादा होगा। तो एक्साइटेड स्टेट के पास अपनी एक इंट्रिंसिक विड्थ है, ग्राउंड स्टेट के पास विड्थ काफी कम होगी क्योंकि वहां पर लाइफ टाइम इनफिनिट है। सर हर केस में क्योंकि हर एक केस में क्योंकि ये एनर्जी इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी विड्थ आएगी। उसके अलावा जो आप स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं, जो प्रैक्टिकल भी करते होंगे, तो स्लिट ओपन करते हैं,
वो सिलेक्ट बहुत सारा वो कंट्रीब्यूट करता है, लाइन विड्थ देता है। उसके अलावा मान लीजिए गैसियस स्टेट है तो प्रोडेनिंग, डॉपलर प्रोडेनिंग का आप नाम सुने होंगे, एटम्स मोशन में है, मॉलिक्यूल मोशन में है। हाँ, तमाम तरह के ब्रोडेनिंग मैकेनिज्म है और कुल मिला के इंट्रिंसिक विड्थ और ब्रोडेनिंग मैकेनिज्म मिला के एक ऐसी प्रोफाइल होती है जिसका स्टैंडर्ड शेप या तो लॉरेंजियन होगा या गॉसियन होगा या दोनों का कन्वोल्यूशन एक क्वाइट प्रोफाइल होता है। इसका थियोरेटिकल स्टडी भी होती है। सर जितने प्रकार के सर सेटिंग होती है सर, उसमें सर जो भी एंटी स्ट्रोक और स्ट्रोक लाइंस होती है सर, क्या वो सिमेट्रिक नेचर की होती है एंटी सिमेट्रिक? फिर से बोलो। बढ़िया बोल क्वेरी को नहीं जिज्ञासा है, जल्दी से बोलो। और एंटी सिमेट्रिक प्रकृति में बहुत सिमेट्री है। जैसे तुम्हारा क्या पूछना है? सर कहने मतलब कि सर जो भी स्ट्रोक लाइंस सर तो ये सर डिफरेंट स्कैटरिंग में सर, जैसे सर हमने स्पेक्ट्रम सर डिफरेंट टाइप में सर कैटेगराइज कर दिए गए, जैसे स्पॉन्टेनियस हो गया, शिफ्टेड हो गया। उसमें सर जो भी स्कैटरिंग जब हो रहा है सर, सपोज दैट उसमें सर जो भी लाइंस मिलेगी, स्ट्रोक लाइंस और एंटी स्ट्रोक लाइंस, तो सर क्या वो नेचर में सिमेट्रिक होंगे कि प्रॉपर्टीज में सिमेट्रिक होंगे? नहीं, ये तो नेचर बना था। नेचर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम मॉलिक्यूल यही बिल्डिंग ब्लॉक है। तो उन्हीं की प्रॉपर्टीज अब जो है ना ये बल्क में आ रहे हैं। हम चीज से बने जो बन रही है वो सिमेट्री तो वहां पर है ही, डिस्प्लेस्ड है। आप नेचर में भी बहुत सारी सिमेट्री है और कई जगह पर नहीं है। और तो सर ने रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बहुत ही आसान भाषा में उसका कैसे हुआ, कैसे हुआ इसके बारे में बताया और इसके एप्लीकेशन बताए और सबको समझ में आया होगा। इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा यूनिटी स्टाफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुमार सिंह से अनुरोध है कि सर को सिंपोजियम करके भेंट करें। On behalf of the entire college fraternity and Department of Physics, I would like to thank Dr. Ranjan sir for such a lucid lecture on Raman spectroscopy and how he has related this to the theme of the symposium. So thank you once again, sir. थैंक यू सर। तो इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा डॉक्टर पीसी पांडे IIT BHU का टॉपिक है स्टडी ऑफ सब नॉन क्रिस्टल फाइबर फॉर सेंसिंग एप्लीकेशन। तो स्टार्ट में थोड़ा सा वेबसाइट से मिला आपको बता दें। वैसे तो रंजना ये पीसी पांडे अपने यूपी कॉलेज से BSc किए, MSc आपका BHU से और PhD भी IIT BHU से है और सर का टीचिंग एक्सपीरियंस 21 साल का। हम लोग पैरा में पढ़ते थे IIT में यूपी कॉलेज में और सब में यंग साइंटिस्ट अवार्ड बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिजिकल साइंसेस से मिला था 2001 में। बेस्ट पेपर अवार्ड मिला था 2001 में। सब कई उसमें लाइफ मेंबर भी है। सर के 66 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है और बाकी सर बताएंगे क्योंकि हम लोगों के बीच के ही है। तो सर शुरू करें।
चलिए पॉइंटर चलिए पॉइंटर Okay, good evening to all of you. बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन. देवेंद्र जी ने सही बोला कि हम लोग यहीं के हैं और बीएससी जब यहाँ से जहाँ से आप बीएससी करते हैं एमएससी करते हैं कहीं भी जाएं आप वहीं के कहलाते हैं. तो ये तो है ही है. आप लोगों ने लेजर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस पर काफी 4-5 लेक्चर्स सुने और स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड मटेरियल्स. So today and at this time I am going to talk with this study of some novel photonic crystal fibers. Actually the title has been written in the slip paper which has been circulated is only crystal fiber, but it should be photonic crystal fiber because this is the basic name photonic. जब क्रिस्टल्स के साथ फोटोनिक क्रिस्टल्स लगा देते हैं तो उसका डिफरेंस काफी अधिक डिफरेंस मैटर करता है. So here this is the photonic crystal fibers and I am going to discuss its some sensing application which we have already calculated or modeled or can say simulated in our laboratory with our students. So this is, and laser spectroscopy, everything is the photon, related with the photon, and here also we have the photonics too. So laser is one of the photonic device you can say, so which I am going to discuss here. Also photonic crystal fibers are able to create some lasers too. So this is a very relevant topic at this symposium, as well. So what I am going to discuss here is, first of all, around in January, when I have taught something about the optical fiber, and the conventional optical fibers. If you have to understand what we have already done, discussed last time here. That you have core cladding and single mode, multi-mode fibers. We have already discussed these things. The criteria for the single mode fiber is this, depending over the B parameter. We know B, which have been defined that 2 pi by lambda into under n1 square minus n2 square. So B has already been. So this optical fiber is very good and it will be used in different places, in different applications, and it has been established field. No issue there. But for certain situations where we have got that attenuations and dispersion, in terms of the dispersion, then we could have a larger dispersion when we have long range of wave propagations will be taken place. So this is the dispersion and attenuation is the major thing which affect the propagation in optical fiber. So for that, and new development always will be there everywhere when science started. Their development will be there. So the new another development which we could have these advantages we have already done. So these applications which have already discussed, it has very lot of medical applications, biomedical applications, sensors everywhere in communications, in industry automation, security alarm system, everywhere you could find the optical fiber. This is the conventional optical fiber which we have known about this. Today I am going to some advance to this optical fiber which is known as the photonic crystal fiber actually. So here you can see here unconventional optical fiber type of situation will be there where we have not only a single cladding structure, but if suppose we have a black type of fibers will be there, means there is
a core and some cladding, some other materials is here, then other materials, then alternate materials will be taken there. Then there will be certainly some, this will affect the propagation of the light from one place to the other. So, and in which ways this will be affected? This will affect that some band of the light will be stopped, some bandwidth of the light will be transmitted. So band gap will be created, is there. So here unconventional fiber is these two. One is the photonic crystal fiber, and which has the holy fiber is there. Where in holy fiber, the core at the center is taken as the holy. Means if it is holy, means it has no material. You can say, and air will be there. So the and other colored material has certainly of some silica. Silica will be taken, suppose, for that. So the refractive index of the material inside at the center is smaller in comparison to the other materials which we have. This surrounding to that section, you can say surrounding to that. So here in conventional optical fiber, the core refractive index should be larger than the cladding refractive index. Okay, then and then only total internal reflection condition could be satisfied, and then the light can travel from one place to the other place by using total internal reflection condition. But here, this type of fiber will be useful, and I will discuss how it will be useful and how the wave can be traveled, can be propagated in the reverse way also, in the reverse context also, where you have the core refractive index is smaller than the cladding refractive index. Okay, and the other type of solid core photonic crystal fiber is here, where the solid core is also be taken solid, means larger refractive index, and some pipe type of situations will be there, can be considered. And so this is the because of this alternating arrangement, you could get some different kind of observations, different kind of theory to explain the wave propagation in this, and this will be helpful in some applications to it. Because we will discuss that applications in detail in this talk as well. So photonic crystal fiber is actually, it has explored in 1996 at University of Delhi. So it is a very new topic and new studies we have. You can consider it. And many physical properties can be derived from the microstructures of the PCF. PCF is now finding applications in fiber optics communication, fiber lasers, nonlinear devices, high power transmission, highly sensitive gas sensors, and other areas too. So a lot of applications it has, because of its different kind of you can say it's characteristics, because of different characteristics, different than the conventional optical fiber. So dispersion can be engineered. Here, the dispersion can be engineered to have a zero dispersion wavelength at any wanted wavelength. In case of conventional optical fiber, we have the zero dispersion wavelength, but it is at a particular wavelength for a particular structure or core cladding refractive indices and other things. We have only a particular wavelength where the zero dispersion can be possible. But here, in case of photonic crystal fiber, we can make zero dispersion conditions for any wavelength for our desire. Also, it can act as the single mode in broadband communication, large mode area of PCF. These things will be the technical one. It can be used as a gas sensor, refractive index sensor, temperature sensor, and a lot type of sensors can be prepared by using this. So, first of all, we have to see, because it is basically depend over the photonic crystal. Photonic crystal fiber is the arrangement of some specific type of arrangement, you can say. So it could be understood by knowing the how this type of arrangement is. किस तरह का arrangement लिया जा सकता है? 1 dimension में, 2 dimension में, 3 dimension में, किस तरह के arrangements हम लोग इसके साथ consider कर सकते हैं. So this is a new class of optical material.
So we have got simply, first of all, we see the one-dimensional photonic crystal, then its extension to the two-dimensional photonic crystal, and this photonic crystal fiber is lying in two-dimensional photonic crystals category. So this type of film, yes. So photonic crystal classification, if suppose we are taking here, it is a kind of analogy, only analogy from the crystallography is taken as a crystal, but here not a crystal. It is a layer type of situation. Layered structures are made. So you have two colors. We are seeing two colors. दो color आपको दिखाई दे रहे हैं, green and blue. So here green has a certain a particular refractive index. Suppose it is N1. Blue has N2. So N1, N2, N1, N2 with identical width. AB is taken. So this type of arrangement is being made in one-dimensional photonic crystal. So here the green color, it have a particular material of particular refractive index, but it is not only in the molecular or atomic level size. It can have certainly in the width in micrometer of the width, length, dimension, it has dimension and length as a sheet, you can say. So this is the arrangement in two-dimensional. Here arrangement in three-dimensional. Also you can extend it, so you could get variations like this. That type of situation, that type of structures will be there in two-dimension, and in three-dimension you have a mesh. This type of mesh you can consider where the refractive index variation is in all the three dimensions. Here the refractive index variation is taken in two-dimension only, and here the refractive index variation of this side will be taken in one dimension. So this is the periodicity of the material will provide us a condition of band gap type of band gap using wave propagation, using Bloch's theorem, as usually you are taking in crystallographic analysis, crystal analysis. This type of situations you will have in general. So photonic crystal devices are the so here the creation of the periodicity. Look here, the creation of periodicity prevent the propagation of electromagnetic wave. This periodicity, only periodicity is, and its shape and parameters, structural parameters could also affect accordingly which band will be blocked or which band will be transmitted depending upon that. So periodicity prevent the propagation of the electromagnetic waves with a certain frequency band, and it is called as the band gap, photonic band gap. So this is the photonic band gap, and in photonic crystal fiber, two types of guidance technology, two types of guidance mechanism is there. One is the index guidance, second one is photonic band gap guidance. So two type of guidance mechanism is there. Index guidance is there just like the conventional optical fiber, where the core refractive index is larger than the surrounding refractive index, and photonic band gap guiding will be there where we have center is of lower refractive index than the surrounding. So this photonic crystal is already be available in nature. So because science will be evolved through the natures only, by seeing the natures, you know, every science can evolve that, and this also will evolve accordingly. So you have different type of things in our surroundings which provides you this type of situation. Like this, if suppose here in this sea, butterfly we have, so this discrete in some in one-dimensional city will be there, means the periodic material arrangement is there, will be, it can be obtained here in this situation, and so because of that, when we are seeing the butterfly or some opal or some type of material at different angle or at different in different colors, we are getting some beautiful colors like this. So if you have अगर आपने कभी देखा वो इस तरीके से बटरफ्लाई को अलग अलग कलर से, वही लेयरिंग है, लेकिन जब उसके ऊपर डिफरेंट एंगल से लाइट पड़ रही है तो वो कुछ और कलर्स दिखाई देती है. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट द रेंज, a particular range of the band will be forbidden for that. Only a certain amount of range will be is visible or reflected back, and so जो
5 कलर या सर्टेन कलर दिखाई देने के लिए तो पूरी की पूरी रेंज आपको मिलनी चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव some different type of color and different type of situations will be there. So you could get periodicity by seeing its SEM graph, SEM photographs. It may have the one-dimensional periodicity, two-dimensional periodicity, and three-dimensional periodicity are there in different type of species are things which is available in our nature. So application wise, if suppose we are seeing the photonic crystal application, photonic crystal is being used in different, I have already told you that photonic crystal in general, not as a fiber, photonic crystal as a general, because photonic crystal fiber will be a particular kind of a device only, one of the device using photonic crystal. Okay, so in the similar way, we have different other type of photonic crystal. It can be used in energy harvesting as well as to increase the efficiency of photovoltaics, as well as it can be used in biosources, displays, lasers, and in several where you could get some requirement, you could find the photonic crystals can be utilized, can be useful for helping for that type of application, in that type of application. So now we are coming over that photonic crystal fiber, and this is the application of 2D photonic crystal PCs. When we are adding PCs, means it is photonic crystals. So a wide range of optical devices based on the involvement of 2D PCs, which have been manufactured, and further research is going on to make them more advanced. The optical filter, wavelength multiplexer, demultiplexer, power couplers, etc. These are the optical devices which could be made properly by using 2D PCs. One of them, this is the ring resonator, which can be made here, the ring resonator, as well as this type of photonic crystal fiber can be made here, and the significant application of PCs in the fabrication of this special type of optical fiber known as photonic crystal fiber. So after that, I am going to discuss about its different type of photonic crystal fiber which has been simulated, modeled and then simulated, and some results, useful results which we have obtained by using a very simple, you can say, simple coding using MATLAB only. So MATLAB is basically available to very easily available software, and so you can use that MATLAB and then you can use obtain some information about this is totally the simulation and modeling work which I am presenting here. But this type of devices, this type of photonic crystal fibers have already been used in industries as well as in research areas too, and in different applications as well. So photonic crystal fiber, you can see here we have already discussed about its structure. Several times I am giving this type of structure. It has different 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose 6 holes are made with this. So this is a hexagonal type of structure can be made in this material. And so what the pitch of it? Pitch means the separation between two rods or two pipes. You can say this, the separation between this is basically known as pitch. This is the core, and other things will be discussed. So these are the parameters which we can model. These are the already established photonic crystal containing electric rods as well. So circular rods से तो बना ही है, electric rods को भी use करके इसको prepare किया है. And when we are using electric rods, then we are getting much more birefringence criteria. Birefringence will be increased. Birefringence means
there is the difference in the refractive index in two perpendicular directions, nx and ny, y का modulus जो है, so that is the birefringence which could be changed when we are using this type of. So if we have high birefringence, then we could maintain the polarization of the wave propagating in there. Polarization maintained fibers can be made by using the larger birefringence type of material or structure. So this could be used in making polarization maintaining criteria. For polarization maintenance and maintaining type, behavior is required in different kind of devices, and in medical application or somewhere else, you could, where it is required, you can use this type of birefringence material. Photonic crystal fibers are of not only of single core, it can be of the multiple core as well. So here we have 1 core, 2 core, 3, 4, 5, 6. So a large number of cores can be made in a single fiber. So we can send a large number of information or signal through different cores as well. So here we have a 6 multi-core single mode photonic crystal fiber. Here two core photonic crystal fiber has been shown here. And the field patterns which have been given by this I have been taken from the paper of Optics Express published in 2002. Here, so this already been reported by some SPR biosensor PCFs have been reported. Honeycomb photonic crystal fibers for biosensing, they have already been reported. They have been reported by some not दिखाई नहीं दे रहा है author का नाम, but you know it has already been reported by some author in 2004 as well as in 2014. So there has always been the possibility of using this type of. Also, so biological sample which can be put here inside of this, and then birefringence can be made, can be measured, and using that birefringence, their behavior of this biological sample could be easily measured by using the photonic crystal fiber characteristic. So some notations, some different notations are there. Some useful parameters, physical parameters are there. Dispersion is there. Dispersion could be of materials as the wave guide. So dispersion can be calculated by this relation here, and some other references or reviews are there. So effective area can be calculated of it. So the effective area of PCF structures can be evaluated by using this equation, and this has been, the effective area is the measure of the area covered by the fundamental mode propagating in that. So how much area the fundamental mode is covered can be evaluated, and so that would be useful in further calculation. So I just want to come to our some work which has been, so numerical analysis, how we could get that numerical analysis. A lot of methods are available, that is beam propagation method, multipole method, finite element method, and finite element method, finite and finite difference time domain method. These two methods are very efficient, and they are used frequently in analyzing different kind of photonic crystal fiber. For one-dimensional photonic crystal, which is also known as photonic band gap material, transverse matrix method is one of the best method which will be utilized to get the properties of characteristics of that one-dimensional photonic crystal. So here, first work which we have done by our student, by my student, is the study of dispersion characteristics by variation of refractive index of a PCF. So dispersion characteristics by variation of refractive index.
So we have modeled a particular structure, photonic crystal, and then we have varied the refractive index of that refractive index of that pole as well as the material core material, and then we have analyzed how the dispersion characteristics are changed. Because we need flattened dispersion characteristics or very low dispersion characteristics, and if refractive index changes and the dispersion characteristics is being recorded, then by back calculation we can also find out if this type of dispersion characteristics we have, then this will be the refractive index of that compound or that fiber we have. Fiber material will be of this refractive index. That back calculation can give you that type of analysis. So we have done this, and the theoretical method which we have adopted here by finite element method using MATLAB, and this is the thing which we use in simulation and modeling cases. First, this flow chart will be necessary. जब भी आप मॉडलिंग या सिमुलेशन करने जाते हैं तो इतनी चीजें करनी पड़ती हैं और वो हम लोगों को हर बार उसको रिट्राई करना पड़ता है, दे फॉर गेटिंग द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ इट। रिसर्च में भी एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा करना होता है, लेकिन इसमें सिमुलेशन और मॉडलिंग के केस में आप ज्यादा और ज्यादा इजीली कर पाते हैं क्योंकि उसमें आपको ज्यादा बहुत खर्च करना नहीं है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट में करने जाएंगे तो उसमें हो सकता है कि ज्यादा खर्च भी करना पड़े। But here this is the flow chart. We have to start, set the basic parameter of core and cladding material in PCF. So what the basic parameter you require, you have to set first. Then you have to compute the finite difference of semi-vectorial wave equation, apply analytical boundary conditions to solve them, scan over whole boundary of PCF structure, and then calculate effective refractive index by diagonalizing the matrix. So these are the techniques, theory which they have been applied. Then satisfactory result, and if not, then we have to repeat this process again, and then we have to find out the proper result which is useful for different situation, for real situation. So this type of symmetry we are used, and the dispersion property of the hexagonal PCF for different lambda values, for different core refractive index we have recorded and we have analyzed for this, and so V effective value as well as versus wavelength have also been recorded for this, and we could get the information about what is the core refractive indices and accordingly how it is varying with the wavelength of the radiation inside of that photonic crystal fiber. Next work is the effect of dispersive materials on dispersion and normalized frequency characteristics of square PCF. The last work is which I have shown is the hexagonal PCF, but here the square PCF. Hexagonal PCF has the 6 corners, you can say 6 rods are there, just surrounding to the core. Here we have only 4 for square PCF. So this type of situation you have created a square type of circuit, and square has been made, and then the dispersion graph and square PCF containing air, gold, silver, dispersive material. We have used some dispersive material for taking their application or analysis for that. Copper in the cladding holes we have been taken, and we have analyzed that, and these are papers have been published in different journals. Here the temperature, effect of temperature on the dispersion properties of PCF. Effect of temperature on dispersion properties of PCF means this can be work as a temperature sensor. How? Because when we are analyzing the dispersion property at different temperature, then we have obtained a particular graph. Okay. Then if at any time, if we have analyzed at a particular temperature, if this is the value of the dispersion, then we can from back calculation we can say that this is at this temperature. So it can have the kind of
temperature sensing type of situations can be maintained here, can be effective. So here this temperature sensors. So for temperature sensors, we need some material which is which refractive index is changing with temperature. We use that particular. We use their property, as well as by using that we can get some information. We have obtained some relations. So this type of work we have taken photonic crystal fiber containing square was. So this type of work, because of time is so limited. Here recent field gas sensing in photonic crystal fiber containing plasma material by finite difference method we have used. This has been published in Sensor Letters. Here in this, gases have been put inside the pipe or hose here, and then we have analyzed. Also, this work can be extended to refractive index sensor based on incident field effect in hollow core PCF for detection of analyte. Analyte means if suppose analyte means here if we have particular thing or particular किसी चीज को आपको एनालाइज करना है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है और उसकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना है, that we call them as analyte. We have put that analyze here at the white places, white जो core है वहाँ पे इसको put करके उसके बाद उसकी characteristics को analyze किया, and then we can identify about that, and some results have been obtained. Analyzing that result, we can say that this type of analyte, this type of refractive index, or this type of dispersions will be obtained for that, and we can. So these type of work which have been done because time is limited and we cannot go into very detail of that. So at the last, I acknowledge to all my students and as well as collaborators and BST and IIT BHU for sponsoring this work. Thank you very much for your. Thank you, Pandit. कोई क्वेश्चन है? सेक्रेटरीज का नहीं कुछ? एक क्वेश्चन बस टाइम लगा. What is the difference between linear photonic crystal fiber and non-linear crystal fiber? Okay, linear and non-linear. Non-linearity will come when we have very high intensity of beam is incidenting in or propagating inside that. So any fiber, photonic crystal fiber, is supporting that type of high beam, high intense beam inside that, then that will be called as non-linear photonic crystal fiber. In non-linearity, of the bit will be the non-linear. And one core refractive index is higher than the cladding. In photonic crystal fiber, we have two type of situations may be possible. इसमें core का refractive index कम भी रहे तब भी हम wave propagation achieve कर सकते हैं by using photonic band gap behavior of that. Okay, and index guiding is also be possible there because they have the hollow core and hollow use at sensors very efficiently. पर फिर क्वांटिटेटिव डिग्री स्टाफ का अनुरोध है कि वो सर पांडे को सिंपोजियम का क्लिप देकर सम्मानित करें. So once again, on behalf of Udai Pratap College and Department of Physics as well as the DVP Star College scheme,
I would like to thank Professor P.C. Mishra sir P.C. Pandit sir for his lucid presentation related to the crystals and its applications. And we had earlier also heard him in this program once in the lecture series. So thank you once again, sir, for being with us and being a part of the DVD Stars team. Thank you. हम लोग लास्ट पिक्चर आ गया है इसका चाहे आशीष कुमार मिश्रा आप लोग बच्चे होंगे ये अपने यहाँ से बेसिक के फिजिक्स से इसके बाद इसका पीएचडी है मद्रास से पोस्ट डॉक फिर उसके बाद बीएससी भी यहाँ से और इंस्पायर फैकल्टी रहे ऐसा भोपाल और 2016 से आईआईटी बीएचयू में फिजिक्स मटेरियल साइंस स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर है। आशीष मिश्रा के 3 इंटरनेशनल पेटेंट है और 3 ऑनलाइन पेटेंट है। अभी 44 इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशन है। वो पॉकेट वाली माइक मिश्रा को अर्ली कैरियर अवार्ड मिला 2017 और एक जो सबसे बड़ा अवार्ड वो माइक 22 में इंसा इलियास यूनिवर्सिटी मेंबरशिप ये बहुत कम लोगों को मिलता है इंडिया में दोनों को मिलता है वो अभी मिला हुआ है इसी साल और आपका स्पेशलाइजेशन फील्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी एंड पॉकेट में रखे इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन सरकार की टॉपिक सामने है आपके सामने मोबाइल है तो सर पिक्चर स्टार्ट करें और सेशन रोड होगा कि 30 मिनट में हम लोग इसको फाइनल करेंगे। Thanks, Dr. Singh, and other organizing members because they are my actual gurus. He can help us. Correction, one correction is I am in Master's Physics from here, from the college. I did my PhD from Kazim, so this one is here, but all are my gurus here. So irrespective, wherever you give a talk, there is always a special feeling being an alumnus and giving a talk at the same place. Now, but it is double challenge here for giving me this talk because now it's the end of the session, so most of the energy of the audience is gone on. And secondly, you heard the talk of Professor Ranjan Kumar, and there is some degree of order of overlap between the work which I do and he does. But I hope that I will be able to differentiate some of the knowledge which was not focused in his particular topic. So the topic itself, you can see that it's again Raman spectroscopy, and 1.5 months before, around 2 months before, I gave a talk, but it was purely on the Raman spectroscopy and how to use that particular spectroscopy as a tool for material characterization. Now going to one particular application, that is also one of the application only, but now enhancing that aura of that application towards how the environmental remediation can occur. So it's all about how to maintain your environment, how you will be maintaining that environment and how you can use Raman spectroscopy at that particular tool. So now this is usually a common slide. Last time people would have seen, and being a spectroscopy person, I can't skip that slide because whenever the light matter interaction comes, there is always this phenomena which are possible. So you can't choose one pick and say that okay, this is happening. These all phenomena are occurring, and now it becomes important that which phenomena will give you the better
idea of the understanding of your material or for that particular application. So, but again, suggesting that okay, transmission would be better than absorption or elastic scattering would be better than elastic is no use, because there are different phases. Like a human nature is there, human behaves differently with different environment. Same happens with atoms. Atoms behave differently with different environments, and you choose that particular signal by which you are looking to observe the behavior of that particular atom. So what we do this. We observe the elastic scattering. We also do some of the study on absorption spectroscopy and all, but the talk is not focused on that particular place. That we are focusing on the scattering part. And when it comes to the scattering, it's important to know when we are focusing either absorption or transmission or scattering, what the kind of signature you will be able to find it out. You will be able to tune it. So it depends upon what kind of light you use, because the same atom will not behave like it is behaving when it is interacting with UV light, or it is interacting with IR light or microwave or so on. As you saw, there was a talk on the microwave radiation as well, and there has been all the talks which are based on the lasers, which are mostly on the visible side lasers. So whatever the spectroscopy we talk about mostly to the visible side, near UV region and near IR region, covering that particular region. So now if your light is having enough energy so that it can tune the electronic states of your atom. So whenever we talk about the states of atoms is not exactly moving, it's all about its electrons which are traveling from one excited state to the other excited state. And when we talk about moving of electron to one excited state to the other excited state, it becomes your electronic transition. Okay, but for that you need a very high degree of amount of energy which need to be supplied. Or it may also occur that you may supply that amount of higher energy in that particular system, but that electronic transition is not occurring, because that would be dependent upon how well the interaction between those two. It's similar like that you will have a classroom which of 25, 30 or 50 students, and none of all you will have equal friendship. The same occurs with this one when light matter interaction coming into the picture. This kind of behavior is not only depending upon what light you are including on that material, it is also depending upon how well they are interacting with each other. And when their interaction is kind of very minimal, then you talk about a very low amount of exchange of energy. So a common sense, again, I try to relate always with humanity because we are human beings. This one. So you know the person very well when you interact with the person more often, and you know the person less when you interact lesser with that person. So same thing occurs here as well. So when the light interaction is less, then you will have less amount of information about that particular atom or your metal, whichever metal is there. And when this interaction is such that it is able to only identify how your molecules or your atoms are vibrating in that particular system, then it becomes vibrational spectroscopy. And that comes with the order of interaction of IR and in the visible range. And that's what is done by all vibrational spectroscopy techniques. And the two major techniques of these are Raman spectroscopy and FTIR spectroscopy. So now the molecules can have different vibrations. Now again I see so many words, symmetry and asymmetry, because I heard so many questions on symmetry and asymmetry. So I would like to say that correlate, because there is always an aspect of symmetry and asymmetry. You can't define the symmetry of the waves without that particular aspect, and that depends upon this kind of behavior. How the material is actually occurring, how the motion of the material is occurring, and based on that symmetry and asymmetry come into the picture. Not based on the light symmetry, light asymmetry, doesn't matter there. Okay, so in those like so there are different kind of this one, and depending upon, it's not that both the vibrational spectroscopy which are Raman and FTR both will be able to observe it all. There is a condition, and which you would have seen it in the talk of Professor Rajarshi,
that he mentioned about something of selection rule of delta alpha is not equal to 0. So there should be a change in the polarization, which is very important. And when that change doesn't occur, and if the change occurs in the dipole moment, then it gives you an IR spectroscopy, and if polarization change is occurring, then it happens to be a Raman spectroscopy. You can observe through Raman spectroscopy. But that limitation over IR is that the dipole, for to have that permanent dipole change moment, you should have that asymmetricity in the molecule and electron distribution, which does not need to be that criteria in the case of Raman spectroscopy. It can have the symmetric molecule, but any instant it's all about how your electron, because we know that electron is revolving around an atom, nucleus in an atom, correct? And it is expected to have, it is not exactly, but it is always treated as a spherical kind of behavior. And whenever you put any electromagnetic field, leave aside laser currently, I am talking about any electromagnetic field, since there is a charge distribution, so that charge distribution will either contract or stretch, and that change is actually a polarization change. So that's where Raman flow technique becomes very, very important, because this is very fundamental, that as soon as electron cloud will come into the field of an electromagnetic external field, then it will respond to that. And whenever it is responding to that, you have actually the Raman signals which are occurring, irrespective whether the motions are symmetric or asymmetric. But then somebody should say that if this is the case, then why to go for the IR spectroscopy when you have the possibility of measuring symmetry and asymmetric, both kind of motion in this one? Because you also observe in the lecture of Professor Ranjan, he talked about the probability of this scattering is of the order of 10 power minus 6 or minus 7. So the weaker the motions would be, it would be very difficult to be observed. So that's where these techniques complement each other. So, and one of the beautiful things we already explained, that this is the scientific discovery which was completely thought, completely experimentally demonstrated, and he got the Nobel Prize, one of the fastest delivered Nobel Prize till now in the history within 1.5 years of time. So that has been one of the remarkable things. So that kind of thing was demonstrated by Professor Raman, and you also already saw some of the things I was not knowing. I was knowing about that he was a civil servant, but not exactly while doing civil service servant he was continuing his PhD work as well. So that one was not in my knowledge. So now what happens in this? It has been already told. I am not going in detail, but you can see what happens here. That if the frequency of the light, emitted light, inelastic scattering light is less than this, then it is Stokes, and when it is greater than this, then it is anti-Stokes. There is a catch in this one. When you talk about atom, you usually talk about atom to be always all electron to be in the ground state. And most of this technique we do study at room temperature. When we apply external field, we do it in our lab with temperature vary, with pressure vary, with electromagnetic field external variable. We do those measurements. But in general, Raman spectroscopy is done at room temperature condition. So when I already know that my system wants to be in the ground state, then where this is coming into the picture, that I am getting anti-Stokes, because they are not the electronic energy levels. They are the vibrational energy levels which are the part of the ground energy state. So even a very small interaction of the light would be able to excite this one. And that's the reason there is always possibility of observing Stokes as well as anti-Stokes light. But there is always, this one would be always higher than this. This is already there because they are always here in this range. But with the very minimum amount of interaction itself, that vibrational excitation can occur. So usually, if you see some of the old Raman studies of the molecules, people demonstrate it one side of the Stokes spectrum, other side of the anti-Stokes spectrum.
The intensity would be lower that you can see for the empty stokes compared to stokes, but mostly they are observed because with a little amount of energy exchange, you have always a possibility of getting this anti-stokes lines. Now, what will be the focus of this talk is mainly of the surface enhanced Raman spectroscopy. So I am not going in detail of the Raman because I have already talked it a few months back and I see some of the common ideas in that one. That this technique is known as a fingerprint technique. Fingerprint मतलब क्यों बोलते हैं? Why to say fingerprint? Because each individual human being is having a unique fingerprint which does not match with the other. So that same thing happened with all molecules as well. If you change even a single chemical bond in any of the organic species, if you change even a single defect in any of the solid material, you will find the change in the vibrational state. And when you find the change in the vibrational state, you already know you will find the change in H nu plus delta nu because your delta nu has been changed. So that's why it is known as a fingerprint technique. And this is the fingerprint technique. I showed it for this purpose because for environmental application, these are the ones which are studied along with some dyes and other stuff. So what I see that okay, it is giving me a clear-cut spectra. I will have a literature. I can observe it and see this one. So it is good, but it is good at the level of bulk, not at the level of molecular concentration. So talking about ppm level, ppb level, that this one, because this technique goes up because already you know it's already 10 power minus 6 times. So what to do? So there is a limitation for this one. So that can we see what are the limitations, advantages and disadvantages of this one. That one more thing that it is good for all the stuff, whether it is solid phase, liquid phase, and this one. You can have it in ambient condition and all. And the best part is like you study lips. You saw lips discussion. And lips is also a very powerful technique in terms of observing that low concentration of the level. But there is a certain degree of abrasion happens at the surface. Because you are talking about 10 power 9 watt per centimeter square of the laser. This technique is completely non-destructive because it is done with the power of the milliwatts of the laser. So it is completely non-destructive and you can have that idea of this one. What the molecules are, what could be the molecules would be. So that is an advantage of this one. Where it goes off, it can't be good it can't be used for purpose of characterizing metals and alloys because metals and alloys are having free electrons which are moving, and when electron is free, it can have an infinite number of possible energy state which it can travel. So whatever the exchange of energy will happen, may not happen with the atomic vibrations, may start happening with the electronic state, and then you do not see the observation of vibrational energy change. So that's where the restriction over or using in metals and alloys. Low sensitivity already talked because it's 10 power minus 7 times this one. And whenever the fluorescence come into the picture, since fluorescence is a very strong phenomenon you are talking about, so it dominates, as you saw in the talk of Dr. Sunil Kumar Singh about the fluorescence, it dominates, start dominating, and then even in spite this, it is giving signal, it is just suppressed in that fluorescence signal. So how to do, what to do, that so that these disadvantages can be removed. And that's where it comes your surface enhanced Raman spectroscopy technique. So I am going to demonstrate not the general work, I am going to demonstrate the work which we are doing in our lab, specific to that particular work. How it is done? So now in 1974, Fisherman actually saw that thing to observe that before benzene, actually this one was the real demonstration for Pilgrim with roughened silver's electrode circuit. So you know silver is a metal. You already know that silver is a metal. And just now before in the slide I talked about that you can't detect metals. So we are not talking about detecting silver. We are talking about detecting this pyridine at very low concentration which cannot be observed if you
you disperse pyridine in a solvent, you cannot observe it below 10 power minus 2 molar concentration. While using this one, silver electrode, you can do it. And because it happens because of the light interaction, and how it happens, there are two different ways of doing it. There are two different kind of enhancement mechanism. One is electromagnetic enhancement and other is chemical enhancement. He talked about the two names of this one. I will go a little bit elaborative on those ones. That what happens here. So in the end, what the signal you are observing from Raman spectroscopy? You are observing only an electromagnetic wave. Correct? So of a weak electric field, because that's why the signal is weak. So there should be a way how you can improve that particular electromagnetic field. So what it is done in that particular case, if you have a metals, nanoparticles. Why surface is needed? Because of this. Because when you bring it down to the nanoparticle, the surface area improves. Dr. Sunil Kumar Singh also suggested the same thing on the fluorescence part. So what happens here? Then when you have a more surface, so what happens? There would be an electron cloud distribution towards the surface. Because the atoms which are lying more on the surface of this particle will be bounded only in one direction and will not be bounded in the other direction. And their electron cloud will lie on this one. So one side you will have electron and other side you will have the scarcity of the electron. And now when you put your laser light on that one, so laser light is an electromagnetic field, it's an oscillating field. So what is happening? Now you have a dipole which starts oscillating because of the external electromagnetic field, which is the laser light there actually. So now it would be start oscillating and then it will reach to a state where resonance will start occurring and the resonance will occur between the dipolar vibrations as well as the input light of the laser. And you know when this resonance occurs, the overall electromagnetic field is the superposition of the two electromagnetic fields. And now because of that, your signal enhances. Because now the resulted signal is much higher than what the laser light, what you were achieving from the laser light or individually from your atom itself. And that's why the metal nanoparticles are preferred to be used. But one more thing, that, can I get some water? Safa? Done. In this case, not only you see the signal of the organic molecule which you observe, you also see the signal for metals as well. अब तो यही हो गया same चीज कि I am contradicting myself. 2 slides back I told that no, you can't use it for metal and alloys, and now I am telling no, you can use it. Then there again physics come. Professor Ekera told one thing, whatever observation you do, physics automatically come into the picture. That's the beauty of physics, and that's the beauty of being a physics student. So what is happening there? That as soon as you bring from bulk to nano, you do not have a free electron state, you have a confined electron states. And now you suppress the electronic transitions which are possible. Once you suppress that one, then you have a signal. It may not be that huge signal what you will be observing for semiconductors or insulator, but you will have a significant signal what you observe. So when you bring to the size from bulk to nano, you start observing those metals as well as they are started helping you out to observe those organic species which could not be observed at that trace level, at that low concentration level. Okay. So then again, when I say this, तो यही समझ में आता है, and Professor Ranjan also only talked about metals. So it means metal nanoparticles can be used for surface enhanced Raman spectroscopy. It is not so. There can be the other ones which can have the semiconductor behavior as well. And along with your electromagnetic enhancement, if you have metal, you have always a highest energy level, which is a Fermi energy level. And then there is always a probability that whatever analyte you are observing it, this is an analyte which you are looking for analysis. So there can be always a transition which can happen through this way. And when this is happening, there is a chemical interaction is occurring. Chemical interaction का मतलब क्या है? आपके energy level में transition कुछ हो, correct? Until that it's a physical interaction.
So when that started happening, this gives you a chemical enhancement. But the contribution of chemical enhancement in any metal nanoparticle system for search is much more small compared to your electromagnetic enhancement. But when you do the with semiconductor system, ये थोड़ा होता है, यहाँ पे valence band है, connection band बता रहा हूँ. There is always a probability that if you have a band gap which is coming either close to your laser light frequency or matching with this one, you have always a probability of excitation from valence band to conduction band. So you have an excitons. So you have now extra charge pairs which can interact, and their motion from molecular HOMO level to the conduction band and valence band to the LUMO level of the molecular structure. So this again gives you a chemical enhancement. So it is not only restricted towards only metallic nanostructures, you can do it with semiconductor system as well. Why it was important to talk about semiconductor? Because already जानते हो घर में जब सोना, चांदी, प्लेटिनम कितनी महंगी चीज है ना, नाम सुन के लगता है अरे बहुत पैसा खर्चा होने वाला है. So अगर एक्सपेरिमेंट के लिए भी अगर उतना खर्चा करना पड़ेगा, so it is a difficult task. So people started looking into the area where they can find it out the cost-effective systems which can still enhance the signal from the analyte molecule, which you could do it from gold, silver, platinum and all, or palladium, but it was very costly task. ये already मैंने आपको इसमें कवर कर दिया है, अभी तक जितनी बातें बोली हैं, I have already covered it. So in this conventional search substrates, these are the ones which are gold, silver and copper are mostly used. Since platinum is very costly, so people don't just leave it. And gold and silver are more used compared to the copper because copper oxide formation is much more easier compared to silver oxide formation or gold oxide formation. Okay, so that's why, and once it forms oxide, now it does not have the metallic behavior, so it will not have that electromagnetic enhancement, and now it will not have the enhancement in the signal. So you need pure metal nanostructure for that purpose. So that's why these are the two ones which are mostly used. And in semiconductor systems, zinc oxide, TiO2, cuprous oxide, these are the systems which are used for this one. But as I already mentioned, that enhancement due to electromagnetic interaction is much more larger compared to the chemical enhancement, and because of that, these ones are having a low level of detectivity compared to this one. So there has been a tremendous focus on in the scientific community how to improve semiconductor systems which can do, if not same, but close to the order of detectivity what silver or gold do. So this is one of my initial results. Why I am showing it? Because I can show you the difference between the conventional substrate and the advanced substrate systems which are currently being investigated, which are not in the market. So zinc oxide nanoparticle, and we have detected methylene blue and methyl orange. These are the common dyes which are used in textile industries. So the textile industries का water output होता है, it contaminate. आपका गंगा रिवर बहुत contaminate होती है घाट के पास, इसकी वजह से भी दशाश्वमेध घाट पे पहले देखो बहुत सारी साड़ी की टेक्सटाइल्स थी और धीरे कम की गई उनको, या उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सेपरेट किया गया. But जहाँ large volume of water you are talking about river, then whatever amount you put it, it goes in a very low concentration level. आप तो ज्यादा डाल दो पर वो धीरे बढ़ाएगा ना, तब तक पता चल गया कि it goes to a very harmful level by the time you have a technique which you observe it. So that's why you needed to observe it at much pre-level that you know that okay, the initiation has happened. So we chose two dyes, methylene blue and methyl orange, and I can show you we observed up to 10 power minus 9 molar of detection. So अभी इसमें भी comparison study whenever we do it in the research level, what it is done, किसी ने कह दिया हमने 10 power minus 6 किया, किसी ने कह दिया 10 power minus 9 किया, किसी ने कह दिया 10 power minus 12 किया. What's the comparison? What the basic line? So there has to be an analytical method to observe it, because methylene blue और रोडामिन 6G, इन दोनों का क्या होगा, रोडामिन 6G को आप हो सकता है 10 पावर माइनस 3 मोलर तक ऑब्जर्व कर पाओ ऐसे बगैर किसी सबस्ट्रेट के, एंड मेथिलीन ब्लू यू कैन ऑब्जर्व इट अप टू 10 पावर माइनस 5.
तो इनहेंसमेंट हमने क्या किया, -5 से लेके -9 किया, और अगर रोडामिन कर रहा हूं तो -3 से लेके माइनस किया. So that becomes a very important parameter. What you can observe it without doing search and what you can observe it with doing search, and that is what is known as analytical enhancement factor. So you observe how much concentration you can observe it and what the intensity you will observe in search condition. And when you do not have a search substrate, you are directly taking that particular dye and what concentration you can observe and what the intensity of that signal would be coming. That becomes your actual scientific parameter by which you would be comparing. So you can see analytical enhancement factor we are getting of the order of few hundreds. और metal nanoparticle के केस के लिए it comes to the order of 10 power 8, 10 power 6, that order. So it's a huge difference, correct? So conventional, it means conventional system are not good enough to compete with those ones. So now, what are the novel search subjects? So basically I am a material scientist and later on I am a spectroscopist. First I am a material scientist. So I always look into the materials, how to make new kind of materials. And we do most of the studies on carbon nanostructures, graphene, carbon nanotubes and all, and metal dicyclogenate nanostructure, and some of the recent ones are magazines, which you will find very less number of articles currently at this particular stage. So those are the materials which we work on. So what's the beauty in this? Graphene is neither a pure metallic nor a pure semiconducting, but with a very high degree of electronic mobility, means electron is free because of the pi electrons which are there. So I have that advantage of very good conductivity of the metals, and preparing this one is much more cheaper compared to the metal nanoparticles. Okay. Similarly, I have semiconductor systems. So now it becomes not pure metal, not pure semiconductor. That's why graphene is known as semi-metals. Okay. And now I have semiconductor systems which are transition metal type siliconides, which are MOS2 and MOSE2, and they are pure semiconductor system. And best part, they are visible band gap semiconductor. क्योंकि visible light आपके लिए सबसे आसान है पाना. किसी भी दूसरी लाइट की तुलना में आपको visible light डेवलप करना सबसे आसान आज भी है, करेक्ट? और पहले भी था. So it's their band gap lies in that particular range with this possibility of that van der Waal interaction, which allows electron mobility is still high in these semiconductors compared to all other semiconductors. तो अब conductivity semiconductor है, metal से तो कम होगी, पर among semiconductor it is having a very good conductivity. So again you bring it the idea of your electron cloud coming into the picture, and you will have that separation which would be operating. So now these are the systems which by the property itself they suggest that they could be a good substrates. So मैं अब सीधे कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ. So ग्राफीन को अलग-अलग मेथड्स हैं. We do it with CVD and we do with the chemical method. So with the chemical method we have demonstrated using different chemicals, हाइड्रोजन आइडेट से और यूरिया से यूज करके, and we observe it detection up to 10 power minus 6 molar of concentration. For rhodamine 6G it is. पहले ही मैंने बताया methylene group could observe at 10 power minus 5 without substrate. Then we went to 10 power minus 9. And rhodamine 6G you cannot observe below 10 power minus 3 molar in Raman spectroscopy. And then we are moving to 10 power minus 6. So it is coming up to same order. But where is the improvement? RG may not give, but the other material. Now, when we do with pure MOS2, these are the MOS2 island, we could detect it up to 10 power minus 9 molar concentration. So we moved from 10 power minus 3 to 10 power minus 9. 6 order of difference. It's a huge difference with the semiconductor system. What is usually expected to get from the gold nanoparticles. This one. And that enhancement factor you can see it is coming at now 768. What you were getting 300 or 116 value, now you are coming close to the 1000 range. Coming close to the 1000 range. So what we thought? Same material, can we do synthesis in different way which will further enhance that one? Then we synthesize this kind of MOS2. जो पिछला MOS2 था उसमें each number of layer around 6 थी. So most of the direct band gap transition was starting moving towards indirect gap transition.
So chemical enhancement was reduced in that particular case. When we started moving to bilayer this one, we started observing up to 10 power minus 10 molar of concentration. One more order, एक 6 जो order change कर रहे थे 7वें order तक का डिटेक्शन हो गया, because now what we control the chemical enhancement, because that is in our hand by controlling the morphology of this particular system. And same program in 6G we started observing at 10 power minus 10 molar concentration. And then we thought, पर अभी आप जितने भी देखोगे, this synthesis to say that you will have a very uniform system growth, आप जितनी बार भी करोगे वही चीज आएगी same, it is a very challenging task. It is a very challenging task. So can we reach to a state where we have a particular architecture which improves the performance and its reliability is very huge. So its growth is repeated. Okay. So then we talked about this kind of growth, and our group has been the only group in this country who has demonstrated this. No other group in this country has demonstrated this kind of growth of the material, of vertical architecture. So rather than growing these horizontal sheets, we started growing it vertical sheets. But it was not bilayer. It was again few layer. Again few layer, going 4 layer or 5 layer. And again we are observing up to 10 power minus 10 molar of detection. जो few layer हमें horizontal वाले में 10 power minus 9 था, now we moved in few layer of this one vertical architecture, we moved up to 10 power minus 10 molar concentration. अब कोई भी हमसे कहेगा कि अब आप 6 लेयर का ही अगर MOS2 है तो उसमें डायरेक्ट बैंड गैप का कंट्रीब्यूशन है, इनडायरेक्ट बैंड गैप का कंट्रीब्यूशन तो उतना ही होगा, चाहे उसको हॉरिजॉन्टली रखो या वर्टिकली रखो. तो फिर ये कौन अंतर आ रहा है? दैट्स द की ऑफ दिस वर्क. आप पहले ये बता दो ना, ये एनहांसमेंट फैक्टर यू कैन सी अप टू 10 पावर 4 नाउ इट हैज इंक्रीज्ड. व्हाट वाज इट 10 पावर 2, वी हैव bring it up to 10 power 4, and it is happening because of this. This is known as Herbert-Teller vibranic coupling. This is the final slide. आपका ये मोशन और ये ट्रांजिशन तो होता ही होता है. You can have a control over this as well of different vibrational energy levels from HOMO to this one, and that enhances actually this one. Secondly, along with that exciton transition and molecular transition, what is happening in this kind of structure, that what you see, you have this kind of sheets. When light will fall, अगर horizontal sheet पे fall करेगी तो कुछ absorb होगा, बाकी scattered हो गया. पर अगर आपका ऐसे है, so it will start giving you a phenomena of total internal reflection. It will have a multiple reflection. It is not suggested to be total internal reflection. It is suggested to be a multiple internal reflection. So each time जो आप ऐसे फॉल कराते हो और मान लो 20% एब्जॉर्ब हुआ, 80% रिजेक्ट हो गया, अब इस 80% भी नेक्स्ट टाइम जब वो फॉल होगा दूसरे शीट पे, उसका भी 20% एब्जॉर्ब होगा. So by this kind of architecture, I am able to control the light absorption phenomena also for to controlling this analyte detection, and that's why we could improve it up to 10 power minus 10 molar of concentration. So with this, I will end because it's already 6 o'clock. And I would definitely like to acknowledge, because this kind of work you cannot do with without money, and the money has been supported by SIR and DST, and a recognition which has been recently given to me by INYAS and INSA Academy, this one. And most important, I am not the person who performed the experiment. I am the person who helps the student, and these are the students who do it. So the real appreciation goes to these fellows who are doing it. 2 of them have completed the PhD. One has gone to US, another is moving to Germany, and other 4 are still doing. And one more student, this guy, is again alumnus of UP College 2 years back, and now he has joined my group 6 months back. And I hope that he would be also able to do similar kind of work what his seniors have done. And thank you all for listening me in 2 months' time. आपको सेल्फ क्लियर हो गया ना? पूछना क्वेश्चन ये था, एक डिसएडवांटेज इसमें दिख रहा है, इस सब मेटल और एलॉयड से स्टडी को नॉर्मली नहीं कर पाते, तो सर लोग इस तरह करके सर इतना बड़ा मेटल, ठीक है, और सर एंड डिफरेंट पार्ट में